A very good morning to everyone present. It's my privilege to extend warm and respectful greetings to Honorable Minister of State for Minority Affairs, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Shri Kurian, respected Secretary, Ministry of Minority Affairs, Dr. Chandra Shekhar Kumar, respected Additional Secretary, Ministry of External Affairs, Shri Aseem R. Mahajan, respected Joint Secretary, Ministry of Minority Affairs, Shri Ram Singh, respected Joint Secretary, Ministry of Minority Affairs, Shri Shyama Prasad Roy, along with all senior officers of the Government of India, invited guests, and our deputationists for Hajj 2026. We welcome you all to the Orientation-cum-Training program for Hajj 2026 being held here today at the plenary hall, Vigyan, Bhawan, New Delhi. Deputationists are being deployed to the Kingdom of Saudi Arabia for a period of 2.5 months under the oversight of the Consulate General of India to provide essential administrative and medical support to approximately 175,000 Indian Hajj pilgrims. This orientation program marks the commencement of your significant responsibilities as deputationists in facilitating one of the largest and most critical pilgrimages in the world. The deputationists have been drawn from diverse government organizations, reflecting a coordinated national effort to ensure safe, efficient, and compassionate services for all pilgrims. Now, I humbly request all our esteemed dignitaries, distinguished guests, and members of the audience to please stand for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. Please be seated. On that note, may I request that we now proceed with the felicitation ceremony. May I now request Secretary, Minority Affairs, Dr. Chandra Shekhar Kumar to kindly welcome and present bouquet to Honorable Minister of State for Minority Affairs, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Shri Kurian. May I now request Joint Secretary Hajj, Shri Ram Singh to kindly welcome and present bouquet to Secretary Minority Affairs, Dr. Chandra Shekhar Kumar. May I now request Joint Secretary, Minority Affairs, Shri Shyama Prasad Roy to kindly welcome and present bouquet to Additional Secretary Gulf, Shri Aseem R. Mahajan. May I now request Director Hajj, Shri Nazeem Ahmed to kindly welcome and present bouquet to Joint Secretary Hajj, Shri Ram Singh.
May I now request Under Secretary Hajj, Shri Arun Kumar, to kindly welcome and present bouquet to Joint Secretary Minority Affairs, Shri Shyama Prasad Roy. Kuthu Vilaku, an Indian cultural symbol, represents dispelment of darkness and the arrival of light, knowledge, and prosperity. Now, I respectfully invite the Honorable Minister of State, along with the other guests, to light the ceremonial Kuthu Vilaku as a symbol of auspicious beginnings. शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तु ते दिव्यादिव्यारे दीपत्कार कानि कुण्डलमोतिहार दिव्याला पाहून नमस्कार तिळाचे तेल कापसाची वात दिवा May I now invite Joint Secretary Hajj, Shri Ram Singh, to kindly deliver the welcome address and share his valuable thoughts, setting the tone for this important orientation program with his guidance and insights. Thank you very much. Good morning to all of you. On behalf of Ministry of Minority Affairs, Hajj Division, I welcome our Honorable Minister, Shri George Kurian ji, Honorable Minister of State for Minority Affairs, Ministry of Animal Husbandry, Fisheries and Dairying, Government of India. I also welcome Dr. Chandra Shekhar Kumar ji, who is Secretary, Ministry of Minority Affairs. I sincerely welcome Shri Aseem Mahajan ji, Additional Secretary Gulf, Ministry of External Affairs, Government of India. All the dignitaries have spared their very valuable time and have consented to attend today's program. I welcome our Joint Secretary, Minority Affairs, SP Roy ji, also to be present today for this program. Today's program is a one-day session on Orientation-cum-Training of Haj Deputationists. To attend this program as well as to become resource person, I sincerely welcome our team of doctors headed by Dr. Senthil Nathan and his team for providing international health issues and healthcare arrangement. I welcome from CGI Jeddah team of officers, Madam Sadaf Chaudhary ji, who has come all the way from Jeddah. The entire team were very, very forthcoming and ensuring that all the Hajj managements are done on time. I welcome team of Hajj Corporation of India headed by Shah Nawaz, who are today present and ensure that Hajj operations are smooth. I am also delighted to announce that this year the entire Hajj operation has been planned in very, very systematic way without getting any impunity like last year.
and ensuring that all the entries are done in Nusuk portal. This is very thanks to the team of CGI Jeddah as well as Hajj Corporation of India and the Hajj Division. And as you know that every year the Kingdom of Saudi Arabia has been coming out with multiple new changes in the Hajj policy. This year also there has been numerous changes as far as the issues in the portal, the management in the Hajj operations are concerned. So these kinds of training and orientation programs are highly essential. And those people, those deputationists who have attended last year, they will come to know that there are again some changes in the operations part, as far as operational parts are concerned. So I request all the Hajj deputationists to please go through the entire training program, and you will see the multiple changes. And also this time for Hajj Subhida application, along with that we have introduced the smart wrist watch also. So that also we need to emphasize. So once again I welcome all the Hajj deputationists who are gathered over here from different states across India. I hope that you will have a very good orientation session, and you will be able to take care of Hajj pilgrims when they are deputed, when you are deputed over there in the Saudi Arabia, and we hope that all the operations will go smooth to take care of Hajj pilgrims in Hajj 2026. Thank you very much. Thank you so much, sir, for the welcome address and inspiring us. To set the context for today's program and to reflect on the scale and importance of Hajj operations, we will now watch a short film on Hajj operations. May I request the technical team to kindly play the video, please? हर वर्ष लाखों मुसलमानों का दिल दुआओं और इबादतों से लबरेज होकर खिंचता है उस पाक जमीन की तरफ जहां अल्लाह का घर है, जहां रोज़ाए अक़दस है और जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा की कुर्बानियों की यादें हैं। भारत से हर वर्ष लगभग 2 लाख हाजी हज के इस मुक़द्दस सफर पर रवाना होते हैं। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं। आज न सिर्फ भारत का हज का कोटा बढ़ा है, बल्कि वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया। इस महान कार्य की कमान संभालता है भारत सरकार का अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इस मंत्रालय के अंतर्गत हज कमेटी ऑफ इंडिया साल भर इस काम में जुटी रहती है। हज कमेटी ऑफ इंडिया सभी राज्य हज कमेटियों के साथ चयनित यात्रियों के लिए वीजा प्रक्रिया, टीकाकरण शिविर और स्वास्थ्य कार्ड की व्यवस्था करती है। हर हाजी को एक स्टील और एक ई ब्रेसलेट दिया जाता है, जिसमें उनकी पहचान और अन्य जरूरी जानकारियां दर्ज होती हैं। इसके साथ ही हज कमेटी का फोटो आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, हज गाइड, ओरिजिनल पासपोर्ट, वीजा की कॉपी और बोर्डिंग पास हज कमेटी द्वारा दिया जाता है। राज्य हज कमेटियां बैंकों के सहयोग से हाजियों के लिए फॉरेन एक्सचेंज की सुविधा भी मुहैया कराती हैं। यात्रा के दिनों में देश में विभिन्न एम्बार्केशन पॉइंट से हाजियों को चार्टर्ड विमानों द्वारा सऊदी अरब भेजा जाता है। हज कमेटी के दफ्तर से एयरपोर्ट तक हज यात्री और उनका सामान ट्रांसपोर्ट किया जाता है और एयरपोर्ट पर खाना एवं नाश्ते की व्यवस्था भी हज कमेटी द्वारा ही की जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करता है। हज आवेदन पत्र भरने से लेकर चयन, ट्रेनिंग, मेडिकल सुविधा, टीकाकरण, पासपोर्ट और वीजा, ट्रैवल अरेंजमेंट्स और मक्का मदीना में रहने की व्यवस्था तक। और इसमें उसका साथ देता है विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय। एक टीम, एक मकसद के साथ हर भारतीय हाजी की खिदमत में कोई कसर न छोड़ी जाए।
हज ये एक ऐसा चीज़ है जो हर साल होते हैं, मगर मैं मानता हूँ कि हर साल इम्प्रूवमेंट भी होते रहना चाहिए। और हर मुसलमान का अपना जीवन का बहुत बड़ी एक ख्वाहिश होती है कि अपने जीवन काल में एक बार हज के लिए जाना है। साल 2025 में भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू साहब खुद सऊदी अरब पहुंचे ताकि भारतीय हाजियों के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा ले सकें। उन्होंने मक्का और मदीना में आवास, खाना, चिकित्सा और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाओं को व्यक्तिगत रूप से देखा और सुनिश्चित किया कि हर हाजी अल्लाह का मेहमान है और भारत सरकार उसके लिए मेजबान की तरह खड़ी रहे। सऊदी अरब पहुंचने पर एयर कंडीशन्ड लग्जरी कोच द्वारा हाजियों को उनके होटल या बिल्डिंग तक पहुंचाया जाता है, जहां उनके ठहरने का इंतजाम होता है। साथ ही उनका सामान भी सुरक्षित ढंग से उनके ठहरने की जगह तक पहुंचाया जाता है ताकि हाजियों को किसी किस्म की परेशानी न उठानी पड़े। मदीना में हाजियों के ठहराने का इंतजाम मस्जिद नबवी के नजदीक होता है, जिससे मस्जिद नबवी, रियाजुल जन्नाह और जन्नतुल बकी तक आना जाना आसान हो। मदीना में 8 दिन गुजारने के बाद लग्जरी बसों द्वारा हाजियों को मक्का के अजीजिया इलाके में लाया जाता है। यहाँ एयर कंडीशन्ड कमरों में रहने की व्यवस्था होती है। साथ ही साझा रसोई, वॉशिंग मशीन और 24/7 फ्री बस सेवा मस्जिदुल हरम के लिए मुहैया कराई जाती है। हाजियों की सेहत का खास ख्याल रखा जाता है। ठहरने की जगह के नजदीक ही डिस्पेंसरी, इमरजेंसी सेवा और भारतीय डॉक्टरों की टीम द्वारा मुफ्त इलाज और दवाइयों की सुविधा उपलब्ध होती है। बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए मुफ्त व्हीलचेयर की सुविधा भी होती है। हज के दिनों में अजीजिया से हाजियों को मिना ले जाया जाता है। मर्द और औरतों के लिए अलग अलग खेमों में रहने का इंतजाम किया जाता है। मिना से अराफात तक की यात्रा बसों या मेट्रो ट्रेनों द्वारा कराई जाती है। हज के अरकान पूरे होने के बाद हाजियों को मिना से वापस अजीजिया लाया जाता है। मुकर्रर दिन पूरे होने के बाद हाजियों और उनके सामान को एयरपोर्ट तक सुरक्षित और बेहद आरामदायक तरीके से पहुंचाया जाता है। क्या आप जानते हैं, सऊदी अरब पहुंचने से पहले मीकात पर ही हाजी सबसे पहले एहराम पहनते हैं। सफेद कपड़ों की 2 ना सिलाई हुई चादरें जो समानता और पवित्रता का प्रतीक है। और फिर शुरू होता है हज का असल सफर। आइए जानते हैं क्या है इसके महत्वपूर्ण चरण। एहराम बांधना। हाजी नियत करते हैं, 2 रकत नमाज पढ़ते हैं और तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हैं। तवाफ। मक्का में अल्लाह के घर की हाजिरी, काबा शरीफ का 7 बार चक्कर लगाना तवाफ कहा जाता है। सई। सफा और मरवा के बीच 7 बार चलने को सई कहते हैं। हजरत हाजरा की याद में, जिन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी तलाशा था। मिना की रवानगी। 7-8 जिलहिज्जा को हाजियों का काफिला अपनी अपनी रिहायशी इमारतों से एहराम बांधकर हज की नियत करके मिना के लिए रवाना होता है। अराफात। 9 जिलहिज्जा को वकूफे अराफात हज का सबसे महत्वपूर्ण रुकन है। यहाँ हाजी अल्लाह से दुआ करते हैं। पैगंबर मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अराफात में ही खुतबाए हज तूल विदा अदा किया। मुजदलिफा। अराफात के बाद हाजी यहाँ खुले आसमान के नीचे रात बिताते हैं। यहाँ पूरी रात इबादतों में गुजारते हैं। रमी। शैतान को कंकर मारना। 7 छोटी छोटी कंकरियां मारने के अमल को रमी कहते हैं। इसे बुराई के खिलाफ इंसानी इरादे का इजहार समझा जाता है। कुर्बानी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की याद में जानवर की कुर्बानी की जाती है। हलक या कसर। हाजी बाल मुड़वाते या कटवाते हैं। तवाफे जियारत और विदाई तवाफ। 9 जिलहिज्जा को अराफात में हाजिर रहने के बाद
सबसे बड़ा हज का रुकन तवाफ़े जियारत है। साल 2025 का हज इस मायने में भी बेहद कामयाब रहा कि पहली बार ये हाजियों के लिए इतना आरामदायक और सुविधाजनक रहा। साथ ही पहली बार सबसे कम संख्या में लोग बीमार पड़े या मौतें हुई। अल्लाह सभी हाजियों का हज कबूल फरमाए, आमीन। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भागीदारी से भाग्योदय। We will now present another short film showcasing Government of India's efforts towards successful conduct of Hajj 2026. भारत में अल्पसंख्यक अधिकार केवल संविधान की पंक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्थागत व्यवस्थाओं के माध्यम से सक्रिय रूप से सुनिश्चित किए जाते हैं। इसका एक सशक्त उदाहरण है हज यात्रा का सफल और सुव्यवस्थित प्रबंधन। भारत से हर वर्ष लगभग 1,75,000 हज यात्री मक्का और मदीना की पवित्र यात्रा पर जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों का प्रबंधन केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि योजना, समन्वय, संवेदनशीलता और निष्पादन की परीक्षा है। हज की तैयारियां साल भर चलती हैं। साल 2026 की हज तैयारियों की समीक्षा करने और सऊदी सरकार के साथ द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने नवंबर 2025 में सऊदी अरब की यात्रा की। श्री रिजिजू की सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्री श्री तौफीक बिन फवजान अल रबिया के साथ विस्तृत चर्चा में समन्वय, लॉजिस्टिक्स और सेवाओं को बेहतर बनाने पर सहमति बनी। हज 2026 के लिए भारत का कोटा 1,75,025 तय किया गया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज प्रबंधन को डिजिटल, पारदर्शी और यात्री केंद्रित बनाया है। हज सुविधा ऐप जैसी पहलें रियल टाइम जानकारी, सेवा पहुंच और शिकायत निवारण को सरल और सुविधाजनक बनाती हैं। भारत का हज मॉडल मौसमी नहीं है, बल्कि साल भर चलने वाली जिम्मेदारी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की सऊदी यात्रा के बाद फॉलो अप एक्शन के लिए मंत्रालय के सचिव डॉक्टर चंद्र शेखर कुमार ने भी वरिष्ठ अधिकारियों की टीम के साथ सऊदी अरब की यात्रा की। सचिव के साथ गई वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने मक्का में आवास की शीघ्र स्वीकृति, इमारतों का लाइसेंस, चार्टर्ड उड़ानों की अग्रिम योजना, इन सभी मुद्दों पर भारत की स्पष्ट और दृढ़ अपेक्षाएं रखी। मदीना और मिना में आवास की तैयारियां पहले ही तय समय से पहले पूरी कर ली गई हैं। चिकित्सा व्यवस्था, ट्रेन और परिवहन सुविधा, एविएशन समन्वय और नियामक मंजूरियों पर विस्तृत चर्चा हुई। हज प्रबंधन भारत के लिए आज केवल धार्मिक यात्रा ही नहीं, बल्कि समावेशी शासन का उदाहरण है, जहां आस्था का सम्मान है, प्रशासन उत्तरदायी है और नीति के केंद्र में मानवीय गरिमा है। यही है आज का भारत, जो कहता नहीं करके दिखाता है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भागीदारी से भाग्योदय। I think let us give a huge round of applause for these beautifully crafted videos that so vividly showcased the meticulous preparations and the dedicated efforts undertaken in service of the pilgrims. May I now invite Additional Secretary, Ministry of Minority Affairs, Shri Aseem R. Mahajan, to address the gathering. Shri George Kurian, Hon'ble Minister of State, Minority Affairs, Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Dr. Chandra, Shekhar, Kumar, Secretary, Ministry of Minority Affairs, Mr. Ram Singh, Joint Secretary, colleague Mr. Roy from Ministry of Minority Affairs. I am here on behalf of Ministry of External Affairs to be part of this orientation and training program for deputationists, which is being organized today. I have been associated with the annual Hajj pilgrimage for the last few years. The Gulf Division in the Ministry of External Affairs looks after work
related to the 6 GCC countries, as you know, which include Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and UAE, and also Iraq and Yemen. So this is an extremely important occasion for all of you, as you have been selected for a very important role, which is the annual Hajj pilgrimage. As highlighted in these various videos and by my colleague, Government of India attaches the highest importance to this pilgrimage. We at the Ministry of External Affairs work in very close coordination with the Ministry of Minority Affairs. This exercise is a humongous exercise which entails multiple stakeholders: Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Civil Aviation, Ministry of Finance, and numerous other agencies which we cannot name, but our consulate in Jeddah is the pivotal point for the pilgrimage. Our embassy in Riyadh, which overall, our ambassador there is the overall Hajj coordinator, and we work in tandem with all of them to support Ministry of Minority Affairs in this exercise. What I would also like to highlight in this orientation program is that while you are visiting Saudi Arabia for the pilgrimage, I thought I will leave a few thoughts with you about our relations with the GCC countries and Saudi Arabia. As you know, the countries of the Gulf Cooperation Council, which I have just mentioned, we share a very rich and diverse relationship with them. These are historical, traditional ties, old civilizational linkages, and it's a multifaceted relationship. You are going for a purpose there for Hajj pilgrimage, but I also encourage all of you, do read about, our relations with the Gulf, our growing relations with Saudi Arabia, because this kind of orientation does help you to put in context the country where you are visiting. Our diaspora is one of the vibrant pillars of this relationship. We have almost around 10 million Indians who are based in this region. In Saudi Arabia alone, we have about 2.7 million Indians, 4.3 million in UAE, about 1 million in Kuwait, about 840,000 in Qatar, about 625,000 in Oman, about 350,000 in Bahrain. And this is all, this just shows the importance of this relationship with these countries. Our total trade with these countries is growing rapidly. It stood at US $178 billion last year, and it is a very diverse trade. Energy partnership is an important partnership, and I don't need to overemphasize. Many of you would have read about the region also. It is just like an extended neighborhood. With Saudi Arabia, we share centuries-old ties. Hajj pilgrimage, as you all know, has been going on for many hundreds of years, and this is something which has brought in a lot of cultural linkages, exchanges between both countries. People used to go by ship, people used to travel month-long voyages, and then other trade and commercial, economic linkages, civilizational linkages, which bring us very close, both countries very close to each other. Our Honorable Prime Minister has visited the Gulf GCC countries 16 times in the last over a decade. Saudi Arabia alone, Honorable Prime Minister has visited in 2016, 19, and then recently in April 2025. His Royal Highness, the Crown Prince of Saudi Arabia, has also visited twice in 2019 and 2023, and there are numerous exchanges which are taking place. I also encourage all of you to please have a look at the bilateral brief which is available on our website. Do read about India's relations with Saudi Arabia, because you will be interacting with a lot of local people there. You will be interacting with officials. You will be interacting with many other people. And all of you should realize that you're visiting a foreign country, so you actually represent India there. You are a face there for people to know about India, to see India. And during the course of the Hajj pilgrimage, you will meet pilgrims from millions of pilgrims from various other countries who would want to know about India, who may interact with you about India. Our trade relations, as I mentioned, are growing. We have almost 42 billion trade with last year with Saudi Arabia. Another big institution we have with Saudi Arabia is a Strategic Partnership Council. I don't have the time here to go into great details of this, but do read about it. It is a council which has expanded in many areas, including political, trade and investment, defense, tourism, and culture. So it's a very multifaceted relationship. The Hajj pilgrimage itself, as has been emphasized, we attach a lot of importance to it. Government of India attaches the highest importance. We put our best foot forward and try to, coordinate
and bring in the best services for the pilgrims who go, because it is once in a lifetime experience for many people. And I would not overemphasize on this. It is actually people like you who will be the face of this pilgrimage. So do please see that you deliver services which are, reach out, deliver services. And on many occasions over the last few years, as during this orientation program, you will realize you will be called on to many duties which may be beyond the call of your regular duty. Our consulate in Jeddah tries to make a plan. We work. This exercise for the next Hajj almost starts immediately after the Hajj finishes this year. It is a year-long exercise, planning everything from accommodation, from transport, accommodation, all the various activities of the Hajj Committee of India, allocation of quota. And then as you witnessed in the videos, our Honorable Minister of Parliamentary Affairs and Minority Affairs, Shri Kiren Rijiju, has visited last year also, as recently on November 9th also, to sign the annual Hajj pilgrimage agreement and also to review the arrangements. We constantly endeavor to bring best services. We have brought in many new applications of technology, which I'm sure you will be exposed to in the next 2-3 days, or whenever you have an opportunity. Do see the new apps, what is expected from you. And on these apps, we try to address grievances on a real-time basis. There are some do's and don'ts, which our consul is here from Jeddah. She will make you aware of what are the do's and don'ts when you go there. You have to be aware that you are representing India in a foreign country. The pilgrims could be in difficult situations, but I think that kind of experience you have to imbibe, so that when you represent India, when you represent the consulate, when you represent us and you're servicing the pilgrims, you try to do whatever is best possible for them. I will not go into the details of the logistics and the operations, but as has been emphasized, it's a very huge exercise. There are medical clinics, there are doctors who go to support. We set up branch offices, we set up various head offices, and it's a very concentric circle kind of approach, starting from when the pilgrim enters. A lot of new applications of technology have come in. You should be aware of how technology has evolved in the last few years on portals, including on the Saudi portals, how they are approaching Hajj. They allocate a unique number which is linked to accommodation, which is linked to many other activities. We have done a lot of under the guidance of Honorable Minister of Minority Affairs and Honorable Minister of State for Minority Affairs, who is here. We have done a lot of efforts for reforms, especially related to baggage, for example. Tagging of baggages so that nothing gets lost. Providing services to shorten the travel time. Last year, high-speed trains were used for transport, and a lot of infrastructure is being built there for making the exercise more manageable and also for the facilitation of pilgrims. I will at the end also mention a few things about what the roles of deputationists are. You will be given tasked roles. Please try to fit into your roles and try to do best what you can as part of the team. The success of this exercise, and this I can share with you based on my experience over the last couple of years, there could be social media posts, there could be, do take guidance from designated nodal points, do take guidance from people who are in the system on how to deal with some difficult situations if they were to arise, on any exigency which may arise, and do please try to be proactive to serve the pilgrims. You will have, when you arrive there, you will have many rounds of detailed briefings which will go down to your own charter of duties. But as I said, it's a country, it's a foreign country. Do respect local culture, local traditions, and importance of following the rules, understanding the geography of the place. We also have been aware that, sometimes the temperatures are high during the later part, especially in May, June. So please don't underestimate the importance of keeping yourself physically fit.
And this again is something which we emphasize every year. From now onwards, you should have a regimen where you every day are able to follow some routine of physical fitness. You are able to take care of yourself, only then you will be able to take care of the pilgrims. The duties sometimes are very long. You can be called on in the offices at odd hours. And whatever you supplement as a team, I think that will be important. So I once again take this opportunity to wish you all the best. It's a very important role, and I'm sure all of you are proud of having been selected for this role of representing India and doing service to the pilgrims, which is a great duty. And let me reassure you that from the Ministry of External Affairs, we continue to work very closely with the Ministry of Minority Affairs, other agencies. We work very closely with the Embassy of Saudi Arabia in Delhi. We work very closely through our embassy and our consulate in Jeddah with the Ministry of Hajj and Umrah in the Kingdom of Saudi Arabia. In fact, many meetings we organize, virtual, others, because it's an exercise which is of such gigantic nature that we have to constantly engage with them and constantly follow on the new developments, the various guidelines, and then all these operations which take place, which include the air charter operations and the many other logistical operations. So it will be a constant endeavor to do that. While you have time, I understand you will be leaving around the first week of April. Do continue to make yourself abreast with the various applications, especially the use of technology and the new reforms and what duties are given to you. And in the next day or two, when you interact here and when you go there, of course, we will further work with you and offer you all support. So thank you very much once again. Thank you very much, sir. We are grateful to Shri Aseem R. Mahajan, Additional Secretary, Ministry of External Affairs, for his kind and insightful words, providing us with the international and diplomatic perspective of Hajj management. I now have the honor of inviting Secretary, Ministry of Minority Affairs, Dr. Chandra Shekhar Kumar, to kindly address the Deputationists and the distinguished gathering with his guidance and valuable thoughts. Very good morning to all. Shri George Kurian ji, Honorable Minister of State, Minority Affairs. Shri Aseem Mahajan ji, Additional Secretary, Gulf, Ministry of External Affairs. My colleague Ram Singh ji, Roy Sahab ji, officials from CGI Jeddah or various ministries, particularly Ministry of External Affairs, Ministry of Health, Ministry of Civil Aviation, MHA, and without their support, this Hajj operation is not possible. So I take this opportunity to also welcome and thank them. And most important are all our deputationists and our colleagues from my ministry and ladies and gentlemen. तो सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आपने जो पहले एक वीडियो देखी अभी, तो जब मैं इस मिनिस्ट्री में मेरा कार्यकाल ऑलमोस्ट महाजन साहब पूछ रहे थे काफ़ी हो गया, 1.5 साल 2 साल होने जा रहा है, ये दूसरी हज हम करवा रहे हैं। तो जब मैं ज्वाइन किया था, सो अभी जो आपने वीडियो देखा, तो मैं जब ऐसा लास्ट ट्रेनिंग अटेंड किया, मैं इसी दूसरे वेन्यू में था, तो वहाँ पर सीधा केवल वो भाषण ही हो रहे थे। तो मैंने बोला भाई ये भाषण लोग सुन के ना, वो भाषण चलता नहीं है, कुछ उनको दिखाओ, वीडियो दिखाओ। तो वीडियो बनाया तो कुछ वीडियो था नहीं। तो फिर हमने हमारे मिनिस्ट्री के मीडिया में एक मिस्टर हर्षरंजन जी हैं, उनको बोला, तो वो सीईओ जो हमारे हज कमेटी ऑफ इंडिया हैं और सीजीआई जड्डा, उनके साथ संपर्क करके ये वीडियो आपके लिए बनाया। तो ये इतनी अच्छी वीडियो मैं बोला, तो इसके लिए आज वो नहीं है हर्षरंजन जी, है ना। तो वो राम सिंह जी बोल रहे थे कि भाई सर अगर आप बाहर से बनवाते ही ऐसा वीडियो तो 2-4 करोड़ रुपया ले जाता कोई करके। तो और हर्षरंजन जी ने फ्री बनाया है हमारे लिए वीडियो, वो हमारे में है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि केवल भाषण से ना फिर हम समझ नहीं पाते हैं कि चीज़ों की जो हाउ इम्पोर्टेंट एंड हाउ सिग्निफिकेंट आर दोज थिंग्स। सो दोज पिक्चर्स, दोज वीडियोज एक्चुअली कन्वे द मैसेज वेरी सिग्निफिकेंटली, वेरी क्रिटिकली। तो वो वीडियो इसलिए हमने बनवाया। तो हमको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो ट्रेनिंग है, आप लोग कुछ लोग इस साल रिपीट भी कर रहे होंगे,
कुछ लोग नए भी हैं इसमें, सो एटलीस्ट यू हैव बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो दिस ईयर कि एग्जैक्टली हाउ द हज ऑपरेशन प्रोसीड्स, उसके क्या फेजेस हैं, कैसे शुरू होती है और कैसे कैसे चलती है, और हर एक फेज में यू कैन एक्चुअली प्लान इन योर माइंड कि कहाँ पे क्या सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ सकती है। ये वीडियो से पता चलेगा। हम अब कितना भी आपको बता दें और कितने भी आपको पिक्चर दिखा दें कि साहब पहले आप ये करें, फिर चार्टर फ्लाइट में बैठे हैं, वहाँ उतरे, वहाँ बस से जाएंगे या ये करेंगे, सो दैट थिंग यू कांट हैव मैंने फीलिंग। सो दिस वीडियोज़ एक्चुअली वो फीलिंग आपको लाती है। सो आई थिंक दैट इन ए सेंस दैट विल कन्वे सम मैसेज। बट आज की पूरी दिन की जो ट्रेनिंग है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वीडियो से सारा काम हो जाएगा। टुडे द होल डे ट्रेनिंग आर देयर एंड आवर वेरी की रिसोर्स पर्सन्स आर देयर, वेरी नॉलेजेबल रिसोर्स पर्सन्स आर देयर, एंड वो आपको जब ट्रेनिंग देंगे तो आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ इंगेज विद देम। और जहाँ भी कुछ आपको डाउट आता है, कुछ भी इशू आती है आपकी, अगर जहन में कुछ भी आपके क्वेश्चन है, कुछ भी आपके डाउट्स है, उसको ज़रूर आप क्लियर कर लें, क्योंकि बिकॉज वंस यू आर आउट ऑफ हियर एंड वंस यू आर देयर, सो वहाँ पे एवरीबडी इज़ वेरी बिजी, सो वहाँ पे आपको छोटे छोटे डाउट क्लियर करने के लिए लोगों के पास समय नहीं होगा। एंड एक्चुअली महाजन साहब ने बताया कि यू मे बी आस्क्ड टू अटेंड एनी ड्यूटी विच यू मे नॉट हैव इमेजिन्ड, एंड हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हम हमारे तक जब तक मैसेज आएगी तब तक इट विल बी टू लेट। सो ऑन द स्पॉट एक्चुअली यू आर आवर आइज एंड ईयर्स and everything. So the more you are skilled, the more you are equipped, the more you are trained, so better you can handle the any situation. और वो हज का जो इतना बड़ा हमारा नंबर है, आई थिंक इंडिया इज नंबर 2 हाईएस्ट, मैंने करीब 1.75 लाख हैं, जिसमें कि हमारा सीओ हज कमेटी का ही करीब 1,50,000 के उतना ज़्यादा जाता है हमारा। तो इस बार तो जो हज की जो काफ़ी हमने प्रिपरेशन पहले से कर दी थी। लास्ट ईयर एक्चुअली दिस वाज द टाइम वी आर वेरी स्ट्रगलिंग एंड हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, वो हमारा कोटा ही 30-40 हज़ार जा रहा था। तो एटलीस्ट दिस ईयर विथ सपोर्ट एंड हेल्प ऑफ एवरीवन, एंड ऑल्सो आई मस्ट थैंक द सऊदी अथॉरिटीज़ कि उनके कंट्रीब्यूशन से नाउ आवर ऑल बुकिंग्स, ऑल प्लान्स हैव ऑलमोस्ट बीन फाइनलाइज्ड, और दिस year we have not lost a single quota. So I must thank our ministry officials, MEA officials, Saudi officials, our CGI and Ambassador Saudi Arabia, all, and CGI Jeddah officials, because उनके कंट्रीब्यूशन, उनके कोऑपरेशन से ये पॉसिबल नहीं है। और बट अब जब हज की आज तैयारी हम कर रहे हैं, आपको हम बुला रहे हैं, तो पहला तो आज भी मैं राम सिंह को बोल रहा था, भाई इनका नाम ना डेपुटेशनिस्ट, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है, अब एक कोई अच्छा नाम सोचो। तो आप लोग भी सजेस्ट करें आप अपने को क्या बुलाना चाहेंगे। सो बिफोर यू लीव दिस रूम यू शुड गिव ए सजेशन, वी शुड गिव 10-20 सजेशन राम सिंह जी कि व्हाट शुड बी द डेजिग्नेशन। ये डेपुटेशनिस्ट थोड़ा ना वो जमता नहीं है ना तो आप लोग भी सो यू शुड ऑल्सो सजेस्ट व्हाट शुड बी योर डेजिग्नेशन, है ना भाई। इतना बड़ा काम आप करने जा रहे हैं, ने लोगों को, लाखों लोगों को आपके हज का इतनी बड़ी तीर्थ है, उस तीर्थ में आप भागीदार बन रहे हैं, मैंने भगवान का, खुदा का, अल्लाह का काम कर रहे हैं। तो ये डेपुटेशनिस्ट नाम जमता नहीं, इसका एक अच्छा नाम सोचा जाए। तो इसके लिए भाई राम सिंह जी और नजीम, इसका भाई देख लो भाई, ये जाने के पहले इनसे कागज़ पे सजेशन लो कि हम इसी साल से नाम थोड़ा चेंज करेंगे, है ना, कोई बढ़िया नाम सोचो, है ना। दूसरी बात है कि जो ट्रेनिंग में आपको जो हेल्थ के बारे में बताया जाएगा और आपको वेरियस इशूज़ पे बताया जाएगा, तो उस पर बहुत ध्यान से आप सुने और जहाँ भी डाउट है वो क्लियर करें। इस साल थोड़ी सी गाइडलाइंस भी थोड़ी बहुत चेंज हो रखी है। तो जैसे कि पहले वहाँ पे जो हमारे हज यात्री थे खुद उनका खाना उना अलाउड था, इस साल शायद समथिंग इज देयर बी चेंज। And during my last VC, the Honorable Vice Minister has clarified in some places it will be allowed, in some not be allowed, where the 3-star hotel or something like that. So I don't know, but now we have not finalized what will be our option, how to handle this issue this year, and hopefully we'll arrive at some decision in coming days. तो उसकी भी क्लैरिटी आपको इन ड्यू कोर्स हम लोग देंगे कि वहाँ पे जो खाने की व्यवस्था है, कैटरिंग की व्यवस्था है, और खुद हाजी क्या करेंगे, कैसे करेंगे। काहे कि एक बहुत बड़ा इशू है, मैंने 1.5 लाख लोगों का जो खाना का प्रॉब्लम है, और वहाँ पे अगर जो हमारे हज यात्री हैं उनका ज़्यादा समय अगर वो खाने की व्यवस्था में ही चला जाए, तो अपने वो जिस काम के लिए गए हैं उस काम में वो ज़्यादा समय देंगे, मैंने वैसा ना होना चाहिए।
तो हमने नजीम और उनके हमारे राम सिंह जी और लास्ट टाइम वीसी में भी हमने रेज किया था हमारे एम्बेसडर साहब और सीजीआई साहब को भी कि इसको थोड़ा आप ध्यान से देखना पड़ेगा कि उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, है ना। और दूसरी बड़ी बात है कि जो अब तो ज़माना है टेक्नोलॉजी का, है ना। अब तो आप देख रहे होंगे सब जगह पूरी एआई की बोर्ड लगी हुई है, जहाँ भी आप दिल्ली से आ रहे होंगे तो अब हम टेक्नोलॉजी में भी अब एक टेक्नोलॉजी से वन स्टेप अहेड इज एआई। तो हम धीरे धीरे अपनी टेक्नोलॉजी को भी एआई की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी है उससे आप पूरा अपने को समझ लें, बिकॉज यू विल हैव टू ट्रेन द पर्सन देयर। कोई वहाँ नहीं जानेगा तो आपको भी उनको बताना पड़ेगा, तो उसकी भी ट्रेनिंग आज नजीम आप दे रहे होंगे, है ना भाई। तो उसकी भी ट्रेनिंग बड़े अच्छे से लें, और आप ये ना समझे कि जो कुछ लोग रिपीट कर रहे हैं कि भाई हमने तो लास्ट ईयर देखा था वही चीज़ है, तो वही चीज़ नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस आर बीइंग डन एंड तो उसको भी आप ध्यान से करें, है ना। एक दो चीज़ मैं और बताऊंगा कि बिकॉज यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन और आप लोगों के पास काफ़ी अनुभव है, आप वहाँ मौके पे मौजूद रहते हैं, आप लोग वहाँ सब देखते हैं 30-40 दिन हज का काम कैसे होता है। तो आप भी अपने नोट में कुछ हमें बताएं कि हज की जो आने वाले साल में और क्या हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी सजेशन आप ज़रूर दें हमें, है ना। तो अगर आपको एक्सपीरियंस कुछ लगता है कि कुछ चीज़ें में कमी रह गई है और चीज़ें विदाउट मच फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, काहे कि फाइनेंस जो है एक बड़ा क्रिटिकल पार्ट है, ऐसे सजेशन देने को तो आप वो सजेशन दे सकते हैं, लेकिन जो अल्टीमेटली इट हैज़ टू बी ऑप्टिमाइज्ड बाय द फाइनेंस, है ना। तो फाइनेंस के जो हमारा लिमिटेशंस है थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो ही सकता है। यू ऑल्सो गिव सजेशन कि कैसे हम इस हज ऑपरेशन को बहुत अच्छे और यात्रियों के लिए आरामदेह बना सकते हैं। और इस बार हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि जो नजीम बताएंगे आपको कि जो थोड़े गरीब हज यात्री हैं जो कि एक ही बार में अपना पैसा हज के लिए नहीं जुटा पाते हैं, तो ऐसा है कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग की भी सोच रहे हैं कि लोग 2-3-4 साल एडवांस में प्लानिंग कर लें, धीरे धीरे पैसे जमा करें और फिर अपना हज का अपना कर लें। तो उसमें भी आप देखें कि उसको हम कैसे वो कर सकते हैं। इस बार एक शॉर्ट हज की भी तैयारी चल रही है, जो नजीम जी बताएंगे आपको क्या होता है। कुछ लोगों के पास समय कमी है तो कैसे शॉर्ट हज किया जा सकता है ना। तो इस सब चीज़ों पे थोड़े आप यू प्लीज़ कीप योर ईयर्स आइज़ एंड ईयर्स ओपन एंड मौके पे अपना वहाँ पे सजे दें। और बिफोर आई लीव दिस प्लेस एक चीज़ मेरी आप लोगों से दरख्वास्त रहेगी कि बिकॉज आप वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू आर रिप्रेजेंटिंग अस, यू आर आवर ब्रांड एम्बेसडर, बहुत अच्छे बिहेवियर रखें। कितना भी प्रोवोकेशन हो आप अपनी जो कूल है उसको लूज ना करें, बड़े अच्छे से बिहेव करें और लोगों को गाइड करें। बिकॉज वहाँ पे थोड़ी सी भी आजकल जो है ना ये जो सोशल मीडिया है ना, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, उस पर वायरल कर देते हैं कि भाई देखिए ये इंडिया से आए लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं, है ना। तो लास्ट ईयर भी ऐसे 2-4 ऐसे कुछ लोग वीडियो करते थे। तो मेरी तरफ दरख्वास्त हो कि आप अपने को तरफ से थोड़ा सा केयरफुल रहें, बिकॉज आज की जो यू आर 24 आवर अंडर द वॉच, तो वी हैव टू बी ऑलवेज वेरी केयरफुल फ्रॉम आवर साइड। हम ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको भी तकलीफ हो और लेकर हमें भी कुछ बाद में दिक्कत हो। सो उसके बारे में भी, और जहाँ भी कुछ अगर दिक्कत आता है, कोई इशू को आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, यू मस्ट एस्केलेट इट टू द नेक्स्ट लेवल एंड वो आपको गाइड किया जाएगा कैसे क्या होता है। तो बट मोटा मोटी है कि मैं तो आपको ये बोलूँगा कि यू आर ए वेरी ब्लेस्ड पर्सन, आप लोग खुदा के बहुत ब्लेस्ड आदमी हैं कि आपको ये मौका मिला है लोगों को वहाँ हज करवाने का। तो इससे बड़ी जो पुण्य का काम है, इससे बड़ा काम और कुछ नहीं हो सकता है। यू मस्ट थैंक गॉड, यू मस्ट थैंक अल्लाह कि आपको उसने ये मौका दी है और इस मौके को आप बड़े अच्छे तरीके से करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे आशा है कि आप आने वाले दिनों में बहुत अच्छा काम करेंगे और हमारे देश का नाम बड़ा अच्छा रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for your inspiring words. Your guidance has not only provided clear direction, but has also reinforced the spirit of responsibility and commitment required to serve the pilgrims with dignity, care, and excellence. Now, we come to the most awaited address of the morning. It is my privilege to invite Honorable Minister of State for Minority Affairs, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Shri Kurian, to deliver the keynote address and share his words of encouragement and guidance for Hajj 2026.
Dr. Chandra, Kumar, Secretary Minority Affairs, Shri Aseem or Mahajan, Additional Secretary, Gulf, Ministry of External Affairs, Shri Ram Singh Ji, Joint Secretary, Hajj, Ministry of Minority Affairs, Shri Shyama Prasad Ji, Joint Secretary, Ministry of Minority Affairs, dignitaries, officials, and dear Haj Deputationists. First of all, you are lucky people selected by Allah because you are getting the opportunity to serve 1,75,025 pilgrims. I have divided that almost 1:300. You have to take care of. That is more than 290 people you have to take care of. And it is your duty. And you are committed, dedicated, and spiritually inspired and faith in Allah. These administrative officers and medical professionals. As you know, this Hajj is one of the 5 pillars of this Islam. 5 pillars of Islam. Then your dedication is examined there by Allah, not by us or the government of India. It is directly from there. That in your mind it should be there. Each and every person, when you treat the pilgrim, you should think that he is sent by Allah. That you have to give all support to these people. And at the same time, India's largest and most complex logical operation conducted abroad. This one. This is the most largest, most complex logistical operations conducted in abroad by India. Who is there going for there conducting that? You people. You should remember that. We will be proud of you. It is the pride of India. And Modi ji, he was always taking special interest in that. You can see that ladies without mehram. That how many people are going now? Ladies. This year, 3,266 ladies are going. Out of that, I am happy that 2,638 are from Kerala, my place. And that is a very good thing. And see, separate accommodation for them. There will be separate accommodation for them, separate hospital, dispensary, and women officers who are sitting here, you should take care of them because they are coming without a mehram. And at the same time, you see this taking care of the people that above 65 years, they are given this assistance. Some people are accompanying them. These both initiatives are taken by Narendra Modi ji because these ladies without mehram and old people above 65, they will be having a companion. That is why, see, these all steps reduce the death of pilgrims. See, in 2024, it was 197 deaths of pilgrims. Last year, it was only 68. I wish, I prayed to Allah, this time you will take off these pilgrims so that there won't be any death in this pilgrimage. We will take care of that. And we are having faith in you for this purpose. And Modi ji's aim is to whole of government approach to support every pilgrim.
that I already explained here. How many these ministries are there? It is our Minority Affairs Ministry, External Affairs Ministry. I express our gratitude to Aseem Mahajan for that support from the External Affairs Ministry. They will be there to support you, and Ministry of Health and Family Affairs, some of you are from there, and you are these representatives of that Ministry of Health and Family Welfare. Ministry of Civil Aviation, that also there, and Ministry of Home Affairs. This whole, that is why this whole of government approach, we are telling that it is very important. And the administrative and medical officers, your role is very important. Administration is very important. India's administrative setup in Saudi Arabia is considered among the best in the world. I again give this gratitude to our officials from External Affairs Ministry, especially our Ram Singh ji and Shekhar ji. Shekhar ji went there and made all arrangements. And after that he came, and Kiran Rijiju ji, he was there. You know that he is very dynamic person. That is why he take all efforts and all officials. And at the same time, this Hajj Suvidha app, that app is there. You will be getting training here for information, training materials, feedback mechanism, enables real-time monitoring. That is very important. Real-time monitoring, it will help you, and ensuring better coordination and accountability. At the same time, accountability also will be there. You should take care of that. And this year it is started, our Hajj Suvidha smart wristband. It is connected to GPS. That way, in which way we can find out where is this our pilgrims, and one is left off like that. For this technological initiatives for pilgrim safety, enabling identification, health tracking, emergency response, and crowd management, and missing pilgrim tracking. This smart rich band will be there. And these all arrangements have taken place in advance, especially documentation, transportation, including housing and service arrangement. This year it is already stated that this hotel-style accommodation in Makkah has been introduced to improve comfort, sanitation, and accessibility for pilgrims. And at the same time, for this luggage, it's a headache, radio frequency identification device is provided for luggage tracking and navigation support in the Marshall region, help in crowd, and logistic management. AI-enabled chatbot also is there for weather alert, Qibla compass, and pedometer, enhance safety and pilgrims' comfort. These whole arrangements are there, made by the government of India, led by Narendra Modi ji. That is why we are taking this care of this thing, and see, and this year 600 officials are there, and think that you are the ambassadors of India. You have to get feeling of that. Each and every pilgrim should be protected. And safely they should be brought back. And you represent the face of government of India to the pilgrims. Face of government of India to the pilgrims. That is your duty. And there should not be any complaint. Previously, there were so many complaints that these officials came there and they left for this pilgrimage.
so many years it was heard that they are not taking care of us and they are going for the pilgrimage. You are lucky people. Because selected by Allah. And that is why you should, again and again I say, you should take care of, at the same time the pilgrimage, you have to take the care of the pilgrims. And PM Modi ji always says that development should be all round. Development should be all pervasive. Development should be all inclusive. That inclusion is now should be done by you. Nobody should be left out. Inclusiveness should be done by you. Whoever may be, that should be done by you. And your professionalism, empathy, commitment will be make Hajj 2026 a benchmark in pilgrim welfare and service delivery and international coordination. I once again wish you success and convey my best wishes for a safe, meaningful, and successful Hajj mission. I pray to Allah for safe this pilgrimage and your duty. Thank you very much. On behalf of all the Deputationists, I extend our deepest gratitude to the Honorable Minister of State for Minority Affairs, Shri George Kurian, for his inspiring and reassuring address. Sir, the guidance you have shared today will remain a constant reminder of the standards of the compassion, integrity, and excellence expected from us during Hajj 2026. We assure you that the Deputationists will carry forward this message in letter and spirit and strive to contribute meaningfully to a smooth, dignified, and pilgrim-centric Hajj. To formally conclude the inaugural session, I now invite Director Hajj, Shri Nazeem Ahmed, to deliver the closing remarks. Good morning, everyone. It's an honor and privilege for me to propose the vote of thanks for this inaugural session. It's a privilege for me to sit here and see all this gathering and august dignitaries on the dais sparing their time, especially Honorable Minister of State, Shri Haj Kurian, Secretary Sir, Additional Secretary and Joint Secretaries for this orientation and training program for Hajj. And sparing their time and giving this opportunity for this session itself is an important thing because it shows the dedication of the Government of India towards conduct of successful Hajj. And these two videos that were showcased here, which showed the efforts of the Government of India and the process of Hajj. And the addresses by the august dignitaries, we are very honored that we are able to get such insightful remarks from senior officials as well as officials who have given this address. And we are thankful that the Honorable MOS has spared his time. And we will definitely inculcate all the remarks, especially Sarah specifically told about serving the pilgrims who are the guests of Allah. And the selection of this deputationist by the Almighty, we should inculcate in our hearts that we have got this opportunity to serve the pilgrims, and we should serve to the utmost level of dedication possible and ensure that not even a single pilgrim is left out for want of service by the Government of India. And our secretaries are also emphasized again and again that the reputation of the Government of India is and we are the brand ambassadors of the Government of India in Saudi Arabia. All the 650 selected deputationists, you have been selected through a rigorous process, and you represent the Government of India during this 2.5 month process. So we request each and everyone to maintain decorum and dignity and
make India proud. And I assure everyone that, as said by both our Secretary Sir as well as the Minister of State, we will make Hajj a success and great and successful endeavor. And with this thing, I will also thank our Hajj division as well as the resource persons from different various organizations as well as the officials of the ministry and various organizations who have made successful conduct of this inauguration event. And this inauguration event is not the closing of the program. We will continue the sessions, and these are the core program that will be part of your training session. We request everyone to take full benefit of these training sessions, get your focus into the training program so that you can gain maximum from this training program. Thank you very much. Thank you, sir, for your words of encouragement. With this, we conclude the inaugural segment of the Orientation-cum-Training program for Hajj 2026. The Ministry looks forward to your active engagement in the upcoming sessions that follow. The guidance and detailed briefings that will be shared by our senior officials and domain experts are intended to equip you with the clarity, preparedness, and confidence required for your responsibilities during Hajj 2026. As deputationists, you will be at the forefront of the service delivery, representing not only your respective departments, but the Government of India as a whole. Your commitment to understanding procedures, protocols, and pilgrim sensitivities will directly contribute to the success of Hajj 2026. Thank you so much all for your presence. We now proceed to the first session on overview of Hajj management in Saudi Arabia and pilgrim issues. We would like to invite our dignitaries for the group photo. Let's give a huge round of applause for our dignitaries for inspiring us for the Hajj 2026 upcoming program. We now proceed to the first session on overview of Hajj